Nako? Organic, nako? Right. No Horvata Arve que está ahí. La Navaida. ¿Ah? Casar que banda. Banda la banda. Seguro que va a ir cuca, nako. شريك نوع على ذلك. क्या भी जगह सके बात है
Darum Sam. إيه. شو مية ويكرل؟ हाँ टाइम पेगा का 8:02। लाइट तान का ना रहा वो जाके जमा करना
अस्सलाम वालेकुम कबीर बेटा। जी सर। वालेकुम सलाम। हाँ, अच्छा से स्टार्ट करते हैं। जी, मेरा नेट ठीक है या आपकी आवाज मुझे कट कर आ रही है? मेरी सर आवाज मुझे तो ठीक आ रही आपकी है? जी सर मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ इब्राहिम डील 2020 में साइन हुई। The deal was signed between Israel on one hand and UAE on the other. Abraham deal signed between Israel on one hand and UAE on the other. इस डील के सेलिंग फीचर्स कोई भी इसके टेक्स्ट को गूगल कर सकते हैं तो आपको इसका टेक्स्ट मिल जाएगा। मैंने अपने फेसबुक ग्रुप पे भी शेयर किया हुआ है जो सर फरीद खान के नाम से है, FARIDKHAN, साथ में सर लिख दे, नो स्पेस नो डॉट समथिंग। तो सर फरीद खान के नाम से वो मैंने अपलोड किया हुआ होगा, लेकिन खुद भी गूगल कर सकते हैं। उसके की पॉइंट्स क्या है? नंबर 1, UAE, both the countries recognized each other as sovereign states. UAE on one hand and Israel on the other recognized each other as sovereign states. दोनों ममालिक ने एक दूसरे को sovereign state के तौर पे recognize कर दिया। नंबर 1। दूसरा, Israel would collaborate with UAE to counter cyber terrorism. UAE के साथ कोलैबोरेट करेगा इजराइल टू काउंटर साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इजराइल UAE के साथ कोलैबोरेट करेगा। 2। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन करेंगे। टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन दैट इज साइबर टेक्नोलॉजीज। साइबर टेक्नोलॉजीज में कोलैबोरेट करेगा इजराइल विद UAE। दूसरा, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज में to promote agriculture in UAE would technological use करेगा in UAE, इजराइल करेगा। इसके बाद तीसरा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स होंगे। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स होंगे। फोर्थ, दैट इज economic collaboration between the two countries. Trade relations या overall economic relations initiate होंगे between the two countries. 6th point, जो इस डील का हिस्सा नहीं है, इससे अलग है, that is UAE US, UAE US डिफेंस डील, जिसमें क्या करेगा, US would provide F-35 जेट फाइटर्स। F-35 जेट फाइटर्स UAE को प्रोवाइड करेगा, वगैरह वगैरह। ये इसके की पॉइंट्स हैं, एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस पे क्रिटिक कर रहा हूँ, डोंट वरी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डील। इस डील के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? नंबर 1, Israel wanted recognition from the Muslim world, especially the Arab world. Israel को recognition चाहिए, diplomatic recognition चाहिए from the Muslim world in general, Arab world in particular.
Israel has not been recognized by majority of the Muslim world till date, with the exception of Turkey, which recognized Israel in 1949, Egypt, which recognized Israel in 1978, and Jordan, which recognized Israel in 1994. टर्की ने 1949 में रिकॉग्नाइज कर दिया, इजिप्ट ने 1978 में किया, जॉर्डन ने 1994 में किया। उसके अलावा बकिया मुस्लिम वर्ल्ड, स्पेशली अरब वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया? तमाम मुस्लिम वर्ल्ड क्या कहते रहिए? Israel is a planted state, an Arab, Muslim Arab territory, and they would not recognize Israel as a sovereign state until and unless it does not go back to 1967 borders as per UN resolution. लेकिन UAE recognition of Israel as a sovereign state is a huge diplomatic victory for Israel. UAE का recognize करना Israel को as a sovereign state is a huge diplomatic win for Tel Aviv, that is the capital of Israel. After UAE recognized Israel as a sovereign state, 4 other Arab countries, that is Oman, बहरीन, ये दोनों GCC कंट्रीज हैं, यूएई की तरह GCC कंट्रीज हैं। यानी 3 GCC ममालिक ने, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसमें 6 ममालिक हैं, उनमें से 3 ने रिकॉग्नाइज कर दिया, यूएई ने, बहरीन ने, ओमान ने। सऊदी अरब ने, कुवैत ने और कतर ने नहीं किया। सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत ने नहीं किया। यूएई, ओमान, बहरीन ने रिकॉग्नाइज कर दिया। उसके बाद Morocco and Sudan. Morocco and Sudan also recognized Israel as a sovereign state. तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इजराइल, ये अब्राहम डील। कैसे? सिर्फ यूएई ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, बल्कि 4 other Arab states also recognized it as a sovereign country. उसके बाद फिर objectives of Saudi UAE क्या रहे हैं? Objectives of UAE, multiple objectives of UAE रहे हैं। Number 1, to strengthen its defense, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना। कैसे? 1, it signed the defense deal with the US because of the Abraham deal. US promised to provide
F-35 jet fighters to UAE. यूएस ने यूएई को F-35 जेट फाइटर्स प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया, बट द डील बीइंग सस्पेंडेड बाय जो बाइडन। जो बाइडन ने उस डील को सस्पेंड किया। जो ट्रंप ने साइन किया था, बाइडन ने उसको सस्पेंड कर दिया। दूसरा, इजराइल वुड प्रोवाइड साइबर टेररिज्म technologies expertise to UAE. Like any country in the world, UAE is faced with increasing cyber attacks. Increasing cyber attacks हो रहे हैं किस पे? UAE पे। तो उन अटैक्स को काउंटर करने के लिए Israel is not only providing technologies but also expertise. मजीद Israel would help in training UAE army on counter-insurgency lines. To counter insurgency, UAE military would be trained by Israel troops. Israel troops उनको train करेंगे counter insurgencies को counter करने के लिए। So एक बड़ा ऑब्जेक्टिव यूएई का क्या रहा है? डिफेंस। और वो ये डील उसको प्रोवाइड करके दे रहा है। मतलब क्या? इन फ्यूचर इट वुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सऊदी अरेबिया और एनी अदर कंट्री, रादर it would emerge as a independent defense player in the region. Objective of the deal. The objective of US from the deal क्या रहा? US का objective from the deal क्या रहा? Objectives of US from the deal. Number one, to bring its Arab allies closer. Arab allies को करीब लेके आना था. Israel and the GCC both are the allies or have been the allies of United States of America. But they did not have working relations with each other. इनके आपस में working relations नहीं रहे हैं. Therefore, Trump played a key role in bringing the two closer. दूसरा, to contain ईरान. ईरान को contain करना था. कैसे? अभी अलग पढ़ा रहा हूं. Containment of ईरान करना था. To contain ईरान. ईरान को contain करना था. तीसरा, that is Trump wanted to win election in 2020. 2020 में जो इलेक्शन हुए वो विन करने थे उसने. To win the 2020 elections. 2020 में जो इलेक्शंस हुए वो विन करने थे. Which he could not, जो ना कर सका. So objectives of America, especially Trump administration from the deal क्या थे? वो ये थे. Next, implications of the deal क्या हुए? Implications of the deal. Number one,
Arab-Israel alliance is in the making. Arab-Israel alliance is in the making. कैसे? 5 Arab nations recognized Israel as a sovereign state. उन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया as a sovereign state. So did Israel. इजराइल ने भी कर दिया. In return, all these countries opened diplomatic relations with Israel. All these countries opened diplomatic missions in each other capitals. Diplomatic relation शुरू कर दिए. मजीद, that is, visa on arrival at the airport. The provision of visa at the arrival, on the arrival at the airport होगा. Israel provide करेगा visa on arrival to all these 5 countries, and so would these 5 countries provide visa to Israeli citizens. Increasing exchange of visits by the trade community. जो ट्रेड बिजनेस कम्युनिटी एक्सचेंज विजिट कर रहे हैं. एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन इंक्रीज होगी. टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन इंक्रीज होगी, एटसेट्रा. सो अरब इजराइल अलायंस बनती जा रही है, जिसमें डिफेंस है, टेक्नोलॉजिकल है, सोशल है, इंटरैक्शन, डिप्लोमेटिक वगैरह, और मोर इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक. इकोनॉमिक कैसे? Israel and UAE have planned to increase economic collaboration between the two countries up till 1.5 trillion. 1.5 trillion. 1500 अरब डॉलर तक का इकोनॉमिक कोलैबोरेशन ये दो ममालिक आपस में इनिशिएट करेंगे. 1.5 ट्रिलियन. इमेजिन, ये बिगर साइज होगा देन BRI. So 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बढ़ेगी बिटवीन द टू कंट्रीज, जिसमें बिजनेस होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सिटीज होंगे, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज होंगी, एग्रीकल्चर प्रमोशन होगा, टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा. वगैरह वगैरह. सो 1.5 ट्रिलियन तक का कोलैबोरेशन होगी बिटवीन द टू कंट्रीज. सो अरब इजराइल अलायंस इन द मेकिंग है, जिसका एक बड़ा डायमेंशन क्या है? इकोनॉमिक. दूसरा बड़ा डायमेंशन क्या है? सोशल. तीसरा बड़ा डायमेंशन क्या है? डिप्लोमेटिक. फोर्थ बड़ा डायमेंशन क्या है? दैट इज सोशल, डिप्लोमेटिक, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक. ठीक है. अरब इजराइल अलायंस इन द मेकिंग. दूसरा क्या होगा? द कंटेनमेंट ऑफ ईरान. ईरान कंटेन किया जाएगा. कंटेनमेंट ऑफ ईरान.
ईरान को कंटेन किया जाएगा, द कंटेनमेंट ऑफ ईरान। Iran is becoming increasing, yeah, Iran has emerged as a potential threat to Arab world on one hand and Israel on the other. अरब वर्ल्ड को एक तरफ पे और इसराइल को दूसरी तरफ पे एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन इनटू द अरब वर्ल्ड। वो इंक्रीजिंगली पेनिट्रेट कर रहा है इनटू द अरब वर्ल्ड। याद रखें, सऊदी अरेबिया ईरान रिलेशन में आप लोगों को अलग पढ़ाऊंगा, तो उधर हम तफसील में जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं। नंबर वन, ईरान पेनिट्रेटेड इनटू इराक। इराक में पेनिट्रेट कर गया और वहां पे इसकी प्रॉक्सी कौन है? मेहदी मलेशिया। मेहदी मलेशिया। दूसरा, यमन में पेनिट्रेट कर गया और वहां पे उसकी प्रॉक्सी कौन है? होती रेबल्स। होती रेबल्स। लेबनान में पेनिट्रेट कर गया। लेबनान में पेनिट्रेट कर गया और यहाँ पे उसकी प्रॉक्सी कौन? दैट इज हिजबुल्ला। लेबनान में पेनिट्रेट कर गया और वहां पे उसकी प्रॉक्सी कौन? सो ईरान की पेनिट्रेशन मिडिल ईस्ट में बढ़ गई है और फिर ईरान ने मजीद क्या किया? सक्सेसफुली डिफेंडेड द गवर्नमेंट ऑफ बशर अल असद इन सीरिया विद द हेल्प ऑफ रशिया एंड हिजबुल्ला। रशिया और हिजबुल्ला की मदद से बशर अल असद की हुकूमत को सीरिया में सक्सेसफुली डिफेंड कर दिया है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट US and GCC supported rebels, that is FSA and Al-Nusra. FSA and Al-Nusra. FSA, Free Syrian Army, and Al-Nusra, rebels के खिलाफ उनको सक्सेसफुली डिफेंड कर दिया। तो ईरान की इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्ट बढ़ती गई, which has been a threat for Israel on one hand and GCC on the other. So this deal would weaken the role of Iran in the Middle East, क्योंकि Arab-Israel alliance is in the making. Arab-Israel alliance बन रही है, तो उसका मेजर इफेक्ट किस पे होगा? कंटेनमेंट ऑफ ईरान पे होगा। पाकिस्तान का इस पे टेक क्या है?
UAE and other Arab nations are sovereign countries. It is their prerogative to decide to accept or to diplomatically accept or reject Israel as a sovereign country. ये sovereign right है of every Arab nation to accept or reject Israel as a sovereign country. But Pakistan would not recognize Israel as a sovereign nation. Pakistan Israel को as a sovereign country recognize नहीं करेगा until कब तक? Until it does not go back to pre-1967 borders. Until it does not go back to the pre-1967 borders and accept Palestine as a sovereign country. जब तक वो 1967 बॉर्डर्स पे वापस नहीं जाता, प्री 1967 बॉर्डर्स पे, और पैलेस्टाइन को एज अ सॉवरेन स्टेट एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड सामने आया. एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर अगले दिन हमारे लिए अगली क्लास में सऊदी अरेबिया ईरान मजीद आसान हो जाएगा. दैट इज US pulled out of JCPOA. US pulled out, pull out कर गया from JCPOA, Joint Comprehensive Action, sorry, Plan of Action, Joint Comprehensive Plan of Action. JCPOA भी कहते हैं इसको, P5+1 deal भी कहते हैं, P5+1 deal with Iran. P5 stands for the permanent 5 members of the UN Security Council. One means Germany. They entered into a civil nuclear deal with Iran. मैंने तफसील में किताब में लिखा हुआ होगा, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं किसी भी सोर्स से जो आप लोगों को अच्छा लगे. इस डील के दो बड़े डायमेंशन हैं. तफसील में नहीं जा रहा हूं, जस्ट बेसिक बातें बता रहा हूं. ट्रंप इस डील से निकल गया, क्यों निकल गया वो बताता हूं. JCPOA 2013 में इनिशिएट हुआ. ये negotiation between US and Iran started in 2013, which reached a marathon negotiation हुए of the 6 countries with Iran. 6 countries के marathon long negotiation हुए with Iran. और उस negotiation में क्या था? दो बड़ी बातें थी. Number 1, Iran would reduce the enrichment capacities of uranium. Iran uranium की enrichment capacities को कम करेगा. Iran would reduce the enrichment capacities of uranium. यूरेनियम के एनरिचमेंट कैपेसिटीज को वो कम करेगा. कितना कम करेगा तफसील मैंने लिखी हुई है, वहां से पढ़ सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे इतना बता दूं, 3.4% तक कम करेगा. 3.4% तक एनरिचमेंट लेवल को कम करेगा. दूसरा, those nuclear reactors having higher enrichment capacities would be dismantled. वो न्यूक्लियर रिएक्टर जिसकी हायर एनरिचमेंट कैपेसिटीज हैं वो डिसमेंटल होंगी. ठीक. और फिर द ऑलरेडी एंड हाईली स्टोर्ड यूरेनियम विद ईरान, जो ऑलरेडी क्या कहते हैं एनरिच किया हुआ है,
highly and store है ईरान के पास यूरेनियम, would be transported to Turkey and Russia. वो टर्की और रशिया को एक्सपोर्ट होगा. ईरान would not keep it with itself. वो अपने पास नहीं रखेगा. In return, बदले में sanctions would be removed from Iran. ईरान से sanctions हटाए जाएंगे. अब ये sanctions कितने tough sanctions थे, ये जरा एक highlight. From 2008 till 2013, जो सबसे tough period रहा of sanctions, 8 to 13, 100 to 120 billion dollars loss faced by Iran every year, only in the context of export of hydrocarbons. 100 to 120 billion dollars every year loss, yeah, annual loss being faced by Iran in the context of export of oil and gas. उसके बाद कोई 46 बिलियन डॉलर्स ईरान के फॉरेन रिजर्व्स थे, फ्रीज किए गए. 46 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व्स थे, फ्रीज किए गए. एंड गो ऑन. तो ईरान से वो सैंक्शंस हटाए जाएंगे. ठीक. ये सब कुछ डिसाइड कैसे होगा? An observer team was appointed. Observer team अपॉइंट की गई, comprising upon 7 members. Observer team appoint की गई, comprising upon 7 members. 1 member each from P5+1. जो permanent 5 members of UN Security Council है, उनमें से 1 member each होगा, 1 from Germany. और फिर it would be headed, उसको head करेगा कौन? The member from IAEA. This team would be headed by a member from IAEA, International Atomic Energy Agency. International Atomic Energy Agency का member उसको lead करेगा. This team is supposed to submit a report every quarter. यानी क्वार्टरली उसने रिपोर्ट सबमिट करनी है. हर 3 महीने बाद इसने रिपोर्ट सबमिट करनी है. After every 3 months, it would submit its report. हर 3 महीने बाद ये रिपोर्ट सबमिट करेगी. ये कमेटी, ये कमीशन किसको सबमिट करेगी? To the P5+1. और फिर in accordance with the performance of Iran, sanctions would be removed. Yani, the more the performance of Iran, the more the sanctions being removed. जितना ज़्यादा ईरान परफॉर्म करेगा रिडक्शन ऑफ एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम के बारे में, उतने ज़्यादा उसे सैंक्शन हटाए जाएंगे. This deal was called a historic deal by Obama. By many of the world leaders, especially Obama ने इसको historic deal कहा. क्यों historic deal कहा? As it successfully stopped Iran from acquiring a nuclear bomb. इस डील ने ईरान को सक्सेसफुली स्टॉप कर दिया फ्रॉम एक्वायरिंग अ न्यूक्लियर बम एंड सेव कर दिया किसको? मिडिल ईस्ट को फ्रॉम द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर बम. यूरेनियम थ्रेट से
मिडल ईस्ट को सेव कर दिया, इजराइल को और अरब वर्ल्ड को सेव कर दिया। क्यों? ईरान promised to reduce its enrichment capacities. It not only promised to reduce its enrichment capacities, but also opened its nuclear reactors to IAEA inspection. उन्होंने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ओपन कर दिया to IAEA inspections. But Trump pulled US out of the deal. ट्रंप ने यूएस को इस डील से निकाल दिया। अच्छा, उससे पहले दो तीन बातें और बता दूं। This deal provided Iran with multiple gains. इस डील से ईरान को कई सारे फायदे हुए। Though it stopped या halted the increase in enrichment process. ईरान ने enrichment process की increase को रोक दिया। On the path of nuclearization जो जा रहा था, वो पॉलिसी उसने halt कर दी, stop कर दी। लेकिन multiple gains been made by Iran. सबसे बड़ा गेन क्या हुआ? The process of removal of sanction began. ईरान से sanctions remove होने का प्रोसेस शुरू हुआ। Iran once again resumed its energy exports to India, to Europe, to Japan, and more importantly, to China. That resulted in the stabilization of economy began. क्या हुआ? इसका फायदा ईरान को क्या हुआ? The stabilization of Iranian economy began. ईरान की इकोनॉमी की स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। तो sanctions remove होना शुरू हुए, stabilization of Iran economy began. Resultantly, it found or it gave Iran an opportunity to provide funds to its proxies and allies in the Middle East. Iran started providing funds and to its proxies and allies in the Middle East. तो ईरान की इकोनॉमी स्टेबलाइज होना शुरू हुई। कैसे? रीजन मैंने बता दिया। अब ट्रंप ने इसको हिस्टोरिक ब्लंडर क्यों कहा? ओबामा ने हिस्टोरिक डील कहा था, ट्रंप ने हिस्टोरिक ब्लंडर कहा। कैसे हिस्टोरिक ब्लंडर?
The removal of sanction provided Iran with an opportunity to stabilize its economy and to provide funds to its proxies in the Middle East. Sanctions की removal की वजह से ईरान को मौका मिला to stabilize its economy and provide more and more funds to its proxies in the Middle East, whether वो हिजबुल्ला है या हमास है या होतीज हैं या महदी मलेशिया है, उनको फंड्स देना इंक्रीज कर दिया. जिससे क्या हुआ? मिडल ईस्ट गॉट मोर एंड मोर डिस्टेबलाइज्ड. मिडल ईस्ट ज्यादा से ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड हुआ. थ्रेट टू यूएस एलाइज इन द रीजन बढ़ गए. थ्रेट्स टू यूएस एलाइज, दैट इज जीसीसी एंड इजराइल के लिए थ्रेट्स में इजाफा हुआ. दूसरा, ईरान ब्लफ्स द वर्ल्ड. ईरान दुनिया के साथ ब्लफ कर रहा है. कैसे? ईरान इज ब्लफिंग द वर्ल्ड. It has developed ballistic missile system. Ballistic missile system. मैंने एंटी बैलिस्टिक नहीं कहा. एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जो मिसाइल को हवा में इंटरसेप्ट करते हैं, टारगेट करते हैं. मतलब आपके खिलाफ मिसाइल फायर हुआ है तो उस मिसाइल को आप हिट करते हैं, वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम. बैलिस्टिक मिसाइल कौन से हैं? जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स को कैरी करते हैं, न्यूक्लियर बम को कैरी करते हैं. In 2017, Iran developed ballistic missile system. ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बिल्ड कर दिया और उसका टेस्ट भी कर लिया. तो ट्रंप ने ये कहा कि if Iran was interested or sincere or serious in denuclearization, then why it developed a ballistic missile system? इसने ballistic missile system क्यों build किया? The missile that has the capacity to carry nuclear warhead. मतलब क्या? Iran has suspended its nuclear deal for some time, has not stopped it, और इस डील को या क्या कहते हैं डीन्यूक्लियराइजेशन को परमानेंटली नहीं किया है, बल्कि स्टॉप किया है फॉर अ some period of time to stabilize its economy and once again go on the path of nuclearization. एक मखसूस टाइम के लिए उसने डीन्यूक्लियराइजेशन का क्या कहते हैं प्रॉमिस किया है, परमानेंटली नहीं. Once its economy stabilizes, it would go on the nuclearization path again, on the path of nuclearization again. Therefore, the deal was a historic blunder. ये डील जो थी हिस्टोरिक ब्लंडर था. इसलिए ट्रंप पुल्ड यूएस आउट ऑफ द डील. ट्रंप ने यूएस को इस डील से निकाल दिया. मजीद क्या कर दिया? He pressurized the multinational companies to pull out from Iran
एंड ऑल कंप्लाइड, तमाम ने कंप्लाई किया। क्यों? क्योंकि दे कुड नॉट फेस यूएस सैंक्शंस। They were given two options, either to pull out from Iran or face US sanctions. Therefore, all the multinational companies pulled out from Iran. वो ईरान से निकल गए। मजीद, US pressurized its allies like Europe, India, and Japan. Europe, India, and Japan to downsize their energy imports from Iran. To downsize their energy imports from Iran. यूरोप, इंडिया और जापान को प्रेशराइज किया कि वो एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान कम कर दे, और उन्होंने कम किए। तो ईरान की इकोनॉमी स्लिप्ड बैक इनटू डीप इकोनॉमिक रिसेशन, या Iranian economy is forced with massive economic crunch. Again, उनके सैंक्शंस आ गए। इससे मिडिल ईस्ट को फायदा क्या हुआ? Iran growing role in the Middle East would be contained to a greater extent. ईरान का रोल जो मिडिल ईस्ट में बड़ा वो कंटेन हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। और कमी कैसी आएगी? It would not be in a position to provide funds to its proxies in the Middle East. अपने प्रॉक्सीज को मिडिल ईस्ट में पैसे नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। इसलिए ईरान के प्रॉक्सीज मिडिल ईस्ट में कम वीक हो जाएंगे और ईरान का रोल वीक हो जाएगा। बेनिफिट किसको होगा? जीसीसी को एंड इजराइल को। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ पे क्या है? ईरान वुड गो ऑन द पाथ ऑफ न्यूक्लियराइजेशन वंस अगेन। ईरान एक बार फिर न्यूक्लियराइजेशन के पाथ पे जाएगा। Iran would go on the path of nuclearization. It would resume, yeah, it would increase its enrichment capacities once again. ईरान अपने enrichment capacities को एक बार फिर increase करेगा, as it has uh, announced not to cooperate with IAEA. ईरान ने अनाउंस किया है कि वो IAEA के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। द JCPOA टीम के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। द JCPOA टीम जो 7 मेंबर टीम थी उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, और फिर IAEA इंस्पेक्टर्स को अलाउ नहीं करेगा टू इंस्पेक्ट द यूरेनियम कैपेसिटीज ऑफ ईरान। तो ईरान एक बार फिर क्या है, थ्रेट किस बात का है? वुड गो ऑन द पाथ ऑफ न्यूक्लियराइजेशन। अबीर बेटा, टॉपिक मेरी तरफ से ओवर है, तो बच्चों से पूछो, काफी है, मैं भी थक गया हूँ। अबीर, वलीद, क्वेश्चन जी बोलो प्लीज। ज्यादा नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा, जवाब दूंगा। प्लीज वलीद बोल पूछे। माइक ऑन करना मुझे नहीं आता, ये से पूछें।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसा रिसेंट हम लोगों ने देखा है कि चाइना जो है, यूएस जो है वो चाइना पे बार बार वो सेक्शंस की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी के, वो इधर जो माइनॉरिटीज का है वो उधर ख्याल नहीं रख रहा। तो सर इसमें क्या कहते हैं कि ये लेकिन इसराइल जो फलस्तीन लोगों के साथ कर रहा है क्या, और उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये इसका डबल वो फेसिड एक गेम नहीं खेल रहा कि चाइना में तो वो एक चीज को कंडेम कर रहा है और इसराइल को वो सपोर्ट कर रहा है उस बारे में। वेरी ट्रू, द सेम इट इज हैपनिंग इन कश्मीर। वो कश्मीर पे भी उसका यही स्टांस है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, और इसी तरीके से ईरान के भी आउटराइटली अगेंस्ट है यहाँ पे, और इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और चाइना के खिलाफ जा रहा है। लेकिन चाइना पे सैंक्शन लगाना इतना आसान काम नहीं है। अगर सैंक्शन लगाएगा तो वो सिर्फ अमेरिका लगा सकता है, यूएन रिजोल्यूशन या यूएन के प्लेटफॉर्म पे नहीं लगा सकता। हाँ, वो भी एक चाइना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, लेकिन फिर भी चाइना पे सैंक्शन लगाना यूएस के लिए इतना आसान नहीं है। क्यों? चाइना इज द बैंक ऑफ अमेरिका। सबसे ज्यादा लोन लेने वाला मुल्क चाइना से कौन लोन लेता है? अमेरिका। Can we call it off, please? थैंक यू। अल्लाह के हवाले। सर बोलो। सर वो एक ये वो बात डिस्कस करनी थी कि हम मतलब 2 वीक्स या 3 वीक्स बाद आपकी क्लास होती है हमारे साथ, तो हम लोग काफ़ी अरसे से ना मतलब वेट कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये टॉपिक कुछ हैं वो आपके साथ करने हैं, लेकिन ये होता है कि वो टॉपिक हो नहीं रहे क्योंकि दूसरे ग्रुप्स ने पढ़े हुए हैं। तो सर ये इसका फिर सॉरी सर, वो आई बेग योर पार्डन, लेकिन ये किस तरह होंगे सर? अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके ये मसले हल होंगे। आज आप किसी बैच के साथ कंबाइन हो तो कल ऐसे बैच के साथ आपको कंबाइन किया जाएगा जिनके टॉपिक्स कम हुए होंगे, तो आप लोगों के साथ वो मैं टॉपिक ज़रूर कवर करूँगा, परेशान ना हो। सिर्फ थोड़ा सा डिले ज़रूर आ सकता है, लेकिन टॉपिक कवर करके ही जाऊँगा, परेशान ना हो। ठीक है बच्चे? थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। चलो फिर। वलीद कल आपकी फिर सर फरीद के साथ क्लास है, यू डोंट वरी, आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। एंड आज के लिए मुझे आइडिया नहीं था कि कौन कौन से बैचेस हैं। काइंडली 27-20 बैच 27-20 एंड जीबी आप लोगों का कोई एक सीआर या कुछ भी दोबारा से चैट बॉक्स में अपने कंप्लीटेड टॉपिक्स लिख दें, आज के टॉपिक कंप्लीट हुए हुए, ताकि कल जब आप लोगों की क्लास होगी आप लोगों को सेम इशू फेस ना करना पड़े। एंड ओनली सीआर्स प्लीज।